गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है UNRWA। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो UN ऑफिशियल्स ने कंट्रीज़ को कहा है कि जो फंडिंग सस्पेंड की जा रही है UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए, उसको रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि अदरवाइज़ जो है UNRWA अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो UNRWA जो है वो 1949 में बनाया गया 7 लाख पैलेस्टीनियंस को एड देने के लिए। ये गाज़ा से ऑपरेट करता है, वेस्ट बैंक से ऑपरेट करता है, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसी कंट्रीज से ऑपरेट करता है, जहाँ पर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ ने शेल्टर लिया था। तो एजुकेशन, हेल्थ रिलीफ, सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस, इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सब जो है एजेंसी चलाती है और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर ही चलता है ये, ठीक है। जैसे कि डोनर स्टेट्स, यूएस जैसी जो डोनर स्टेट्स हैं वो इसको पैसा देती हैं, उसी के बेसिस पर ये फंक्शनिंग करता है। तो एक्यूजेशन ये है कि 12 स्टाफ मेंबर जो UNRWA के थे, वो खुद भी अक्टूबर 7 के अटैक में जो है वो शामिल थे। हमास की जो टनल्स बनी हैं वो भी UNRWA की फैसिलिटीज़ के बिल्कुल पास में ही बनी हुई हैं। तो UNRWA ने बोला है कि हमारी कोई ऐसे लिंक नहीं है हमास के साथ, और जो 12 स्टाफ मेंबर्स हैं उसमें से 9 जो हैं वो तो हमने टर्मिनेट कर दिए हैं, उसमें से एक मर चुका है और जो 2 अदर हैं उनकी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई किया जा रहा है। UNRWA जो है वो क्रूशल है सर्वाइवल के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए, क्योंकि ये एजेंसी मेन सप्लायर है फूड, वाटर और शेल्टर का सिविलियंस के लिए जो पैलेस्टीनियन एनक्लेव्स में रह रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ओवरहॉल ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट एक गाइडिंग पॉलिसी लेकर आ रही है नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क नाम से, जो कि साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से बेटर तरीके से मैनेज करेगी। और इसके लिए कोई न्यू लॉ नहीं लाया जाएगा, बल्कि एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस, पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में क्लियरली आर्टिकुलेट करेगा। NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है पब्लिक के सेफगार्ड करने के लिए 2014 में बनाई गई, वो जो है ये रोल निभाएगी। NCIIPC जो है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो है बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको जिसको हम जो क्रिटिकल है इकोनॉमी के लिए, जो अगर इनकेपेसिटेट या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पर, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी है ऐसे ही, जो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री को गाइडेंस और सपोर्ट देता है इंटरनेट गवर्नेंस, नेटवर्क मैनेजमेंट, रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, साइबर अटैक्स के अगेंस्ट। तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंडर काम करता है। तो जो ये फ्रेमवर्क है इसको प्राइवेट कंपनीज और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है मई 2023 में, बट अभी तक पब्लिकली इसको बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये साइबर सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड सेट करेगा कंट्री में, और क्रिटिकल एंटिटीज़, क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि टेलीकॉम, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, हेल्थ, स्ट्रेटजिक एंटिटीज़, गवर्नमेंट एंटिटीज़, इनको जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करने का, साइबर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ठीक है। तो NCIIPC जो है वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर इसको फ्रेमवर्क को बना रही है, और ये एक गाइडलाइन होगी सिर्फ, रिकमेंडेशन इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। अब इसमें ये रिकमेंडेशन भी रखी जा रही है कि लगभग 10% जो टोटल IT बजट होता है वो IT इंडस्ट्री अपना साइबर सिक्योरिटी पर लगाए, और नेशनल नोडल एजेंसीज भी बनाई जा रही हैं मशीन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए, और जो रेगुलेटर्स होंगे जो क्रिटिकल सेक्टर्स को देख रहे हैं वो रूल सेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे ताकि प्रॉपरली ऑडिट किया जा सके, ठीक है। तो डेटा को कैसे मैनेज करना है, जो भी डेफिशिएंसीज हैं ऑपरेशंस में क्रिटिकल सेक्टर में, उनको भी जो है रेगुलेटर्स देखेंगे, और एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या ज़रूरत है ये करने की, क्योंकि इंडिया जो है बराज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स से या सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट से जो है वो जूझ रहा है पिछले कुछ टाइम से, अगर हम देखें तो। और ख़ासकर अगर हम देखें तो थ्रेट एक्टर्स ने नेशन स्टेट्स, और जो चाहे नेशन स्टेट्स हों या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हों, वो इंडिया के ऊपर जो है वो इंडिया के क्रिटिकल सेक्टर्स पर अटैक कर रहे हैं टाइम टू टाइम। और साइबर अटैक्स जो हैं वो एक तरह से
इतने ईजी हो गए हैं कि उसमें इंडिविजुअल लेवल्स के साइबर क्रिमिनल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनबीएस फर्टिलाइजर्स। सो ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओपी इन दोनों और कई फर्टिलाइजर्स को भी जिनको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सपोर्ट मिलता है उसको रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर जो है वो रिजीम के अंदर डाल दिया है। तो एनबीएस फर्टिलाइजर्स अनलाइक यूरिया जो उनको जो एनबीएस फर्टिलाइजर्स हैं इनके मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स होते हैं, लेकिन ये टेक्निकली डी कंट्रोल्ड है, मतलब मार्केट डिटर्मिंड होते हैं प्राइस, ठीक है। तो एनबीएस स्कीम में क्या होता है कि फर्टिलाइज़र जो कि इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए, जैसे प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स या माइक्रो फर्टिलाइजर्स, इनको 2010 से जो है इनके प्राइस जो है मार्केट डिटर्मिंड होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक फिक्स्ड पर टन कैप सब्सिडी देती है। तो एनबीएस जो है, इसलिए एक तरह से गवर्नमेंट क्या है, जो ये फिक्स पर टन सब्सिडी है ये तभी देती है जब थोड़ा रेगुलेशन की जाती है। तो एनबीएस जो है वो बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए जो है वो लाया गया था, ताकि जो है टू मच यूरिया जो है जो फार्मर्स ना यूज़ करें। तो प्रोडक्ट इनोवेशन एनकरेज करने के लिए एनबीएस को लाया गया था। तो डिसीजन क्या लिया है गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने नॉन यूरिया फर्टिलाइजर से रिलेटेड? अब इसमें कहा गया है कि रीजनेबलनेस देखनी है, ये नहीं कि मार्केट डिटरमिनेट का मतलब कि आप एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट कमा रहे हो। आपको रीजनेबल प्राइस रखना है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए। तो अप्रैल 2023 से रेट्रोस्पेक्टिवली ये गाइडलाइंस लागू की जाएंगी और मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं। चाहे मार्केट डिटरमिन्ड है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन आपका इतना इससे ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनीज़ ने जिन्होंने अनरीजनेबल प्रॉफिट कमाया है उनको वो पैसा रिफंड करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र को। अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं एक सही टाइम पर तो उनसे 12% इंटरेस्ट पर वो पैसा वापस लिया जाएगा और फ्यूचर में जो फिक्स्ड पर टन सब्सिडी मिलती है उसमें से वो पैसा भी काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनीज़ ने जो है का जो अनरीजनेबल प्रॉफिट है ये कैसे असेस किया जाएगा? तो पहले तो वो सेल्फ असेसमेंट करेंगे अनरीजनेबल प्रॉफिट्स की। अगर उन्होंने ज़्यादा कमा लिया है तो वो उतना रिफंड करेंगे, अगर नहीं हुआ ऐसा, उन्होंने नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो रीजनेबिलिटी के लिए ऑडिट करवाएगा और उस उनसे पैसा जो है वो वापस लेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये है कि नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो भी इनफॉर्मल प्राइस कंट्रोल में है, चाहे वो मार्केट डिटर्मिन्ड है लेकिन फिर भी जो वो है इनफॉर्मल प्राइस कंट्रोल में है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। जो ये इनडायरेक्ट एमआरपी कंट्रोल्स हैं नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पर, ये अभी भी जो है वो चलते ही रहेंगे और ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर ही जो है इनके प्राइस डिटर्मिन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई इंक डिस्प्लेस। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ई इंक डिस्प्लेस जो हैं, जैसे कि किंडल, जो अमेजॉन किंडल आता है, वो बहुत ही प्लेजरेबल होता है उसको रीड करना, क्योंकि ये ई इंक डिस्प्लेस एज़ कम्पेयर टू एलईडी या एलसीडी डिस्प्लेस बहुत ही आँखों के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं या फिर वार्म होते हैं। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रीन टेक्नोलॉजी है जो कि ई रीडर्स जैसे कि अमेजॉन किंडल में यूज़ की जाती है। 1990 में इसको डेवलप किया गया था। तो ये टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज वाइट पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पार्टिकल्स जो है वो एक फ्लूइड में डिस्प्ले में डाल दिए जाते हैं। तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज जाता है इसमें, तो वाइट और ब्लैक पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पर राइज कर देते हैं और उससे जो है टेक्स्ट और इमेजेस जो है डिस्प्ले पे आ जाती है, ठीक है। अनलाइक एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले जो कि एक बैकलाइट का यूज़ करते हैं, ई इंक डिस्प्ले इंस्टेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक पेपर। और उसकी वजह से जो है लॉन्ग रीडिंग सेशंस के लिए ये आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और इनको बहुत ही कम पावर चाहिए होती है। और ये ब्राइटर लाइट कंडीशंस में भी जो है पढ़ने के लिए आसान होते हैं। बहुत कम पावर यूज़ करते हैं, इनकी बहुत बड़ी एडवांटेज है ये, और आँखों पर स्ट्रेन भी नहीं डालते। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इनका रिफ्रेश रेट बहुत स्लो होता है, तो इसलिए ऑफ कोर्स इनको वीडियो या एनिमेशन को देखने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो कलर और रेजोल्यूशन है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव भी होता है इनको बनाना बहुत। तो इनको जनरली हम बस स्टॉप के डिस्प्ले या फिर वॉकिंग डायरेक्शन साइंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेस्टोरेंट के मेन्यू बोर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इकोवास। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री रिजीम्स जो हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर की, इन्होंने जो है वो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास से जो है वो विड्रॉल कर लिया है। तो ये एक रीजनल ग्रुप है इकोवास, जो कि 1975 में लगोस ट्रीटी से बनाया गया था और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए अमंग मेंबर्स इसका मैंडेट है। विजन जो है इकोवास का ये है कि ये एक बॉर्डरलेस रीजन बनाना चाहता है, जिसमें एक सिंगल कॉमन करेंसी हो, सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक हो, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड, और एक रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशन भी चलाया चलाया है इन्होंने इकोमॉग नाम से, जो कि नाइजीरिया जिसको लीड करता है 1990s और अर्ली 2000s में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाइजीरिया में ही, अबुजा में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सादा तनसीक। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेजर बूस्ट ऑफ टाइज हुए हैं अभी रिसेंटली, जब इंडिया और सऊदी अरेबिया अपने फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक को जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक का, और ये 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में हो रहा है। और ये जॉइंट ऑपरेशन जो है सेमी डेजर्ट टेरेन में किए जा रहे हैं अंडर यूएन चार्टर के मैंडेट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस ऑन जीएसटी। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस को जीएसटी के। तो एंटी प्रॉफिटरिंग मतलब क्या होता है कि जब भी जीएसटी रेट में अगर कट हो रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो एंड कंज्यूमर को पास करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे आप जो है उसके बजाय प्राइस बढ़ा लोगे तो आपके ऊपर एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, तो ये इलीगल काम है। इसके जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको वैलिड माना है। तो गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी बनाई, ताकि जो है वो एक्शन ले सके ऐसे रजिस्टर्ड पर्सनस के ऊपर जो इलीगल प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं। कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो लोकल स्क्रीनिंग कमेटी को जो कंप्लेन कर सकती है, फिर स्टेट लेवल कमेटी जो है एग्जामिन करेगी मैटर को। फिर ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो डिटर्मिन करती है कि क्या ये आगे भेजना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी प्रॉफिटेरिंग को, क्या इसमें जो है जो ये ऑप्शन मतलब जो ये एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स लिए गए हैं क्या ये सीरियस चार्जेस हैं। और अगर होता है तो फिर ऑफ कोर्स आगे फिर ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड्स को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड जो है वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नोटिस इशू करते हैं, और जो है फिर मेंबर्स ऑफ कमेटी जो होते हैं वो एक्शन लेती है। या तो प्राइजेस को रिड्यूस करने को कहा जाता है, या फिर जो पैसा लिया है वो रेसिपिएंट को रिटर्न करने के लिए कहा जाता है इंटरेस्ट के साथ। पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है, और इन सर्टेन केसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल की जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की नॉमिनेशन रहेगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के लिए 2024-2025 पीरियड के लिए। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो हैं ये डेवलप किए गए 17th और 19th सेंचुरीज़ के बीच में, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन और मिलिट्री सिस्टम है जो कि मराठा रूलर्स ने एम्फेसाइज किया था। लगभग 390 फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 12 फोर्ट्स जो है वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया के लिए आगे भेजने के लिए, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 से लेके और पेशवा रूल 1818 तब तक के बीच में ये बनाए गए थे। ये फोर्ट्स कई तरह के हायरार्की के, स्केल के और टाइपोलॉजिकल फीचर्स के हैं, और ये सह्याद्री माउंटेन रेंज से लेकर कोंकण कोस्ट, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स, इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, उनमें से 12 जो फोर्ट्स हैं वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के लिए नाम पर आगे भेजे गए हैं। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is UNRWA. This topic is important for your international relations. So UN officials have urged countries to reconsider their decision to suspend the funding of United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees. So they have recently said that if this funding is not resumed, they will not be able to function in Gaza and other areas where they function, of course. So what is this body? So UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East was founded in 1949 to provide aid to about 7 lakh Palestinians. So this UN agency operates in Gaza, West Bank, Lebanon, Syria and Jordan. So basically these are the countries where the refugees took shelter at that time.
after their expulsion. So this agency runs education, health, relief, social services, microfinance, and emergency assistance programs for these refugee camps. And this is funded almost entirely by voluntary contributions by donor states like the US. So Israel has accused 12 staff members of UNRWA to be involved in these October 7 attack, and Israel has alleged that Hamas tunnels are running next to or under the UNRWA facilities. So which means that UNRWA is complicit in this with Hamas. So UNRWA said that they have no links to Hamas. In the statement, they have said that out of 12 staff members who were accused of being involved in the attack, 9 have been terminated, one is confirmed dead, and identity of the two others is being clarified. So UNRWA is crucial for the survival of people living in Gaza. This agency is the main supplier of food, water, shelter to civilians of the enclave. Okay, so the next topic is overhaul of cybersecurity framework. This topic is important for your security section. So as per certain media reports, government has drawn up a guiding policy called the National Cybersecurity Reference Framework to help manage cybersecurity better. So this framework will be based on existing legislations, policies, and guidelines, and there would be no new law which would be introduced to give a statutory uh, uh, guideline to these frameworks. Okay, so National Cybersecurity Reference Framework will clearly articulate the roles and responsibility of our cybersecurity, and there are two bodies which would be involved in these framework: the NCIIPC, that is the National Critical Information Infrastructure Protection Center, and the National Cybersecurity Coordinator. So NCIIP is a government organization which protects critical information infrastructure for the public, and it was established in 2014. It protects critical information infrastructure from unauthorized access, modification, use, disclosure, etc. And it advises the people to reduce the vulnerabilities, and it also defines what is critical information infrastructure: any computer resource whose destruction could have a bad impact or debilitating impact on national security, economy, public health, or safety is considered as critical information infrastructure. So what is National Cybersecurity Coordinator? It provides guidance and support to state governments and private industry to help formulate policies, and it also provides guidance on internet governance, network management, response strategies for cyber attacks. It works under the National Security Council Secretariat. So what is what is this framework that we are talking about? So it was shared privately with certain companies and other government departments for consultation in May 2023, but it is yet to be made public. So this framework will set the standard for cybersecurity in India. It will also serve as a template for critical sector which have been identified as telecom, power, transportation, finance, strategic entities, government entities, and even health. As critical sectors. So this framework has been drawn up with the support of NCIIPC and the NCSC. So these framework is a guideline. This framework is a guideline, and it is not its recommendations will not be binding therefore. So this is also recommending that enterprises should allocate at least 10% of their total IT budget towards cybersecurity, and national nodal agencies should involve platforms and processes for machine processing of data from different entities. NCRF also suggests that regulators who are overseeing critical sectors should set rules for information security, define information security requirements to ensure proper audit. So sensitive data and deficiencies related to operations in the critical sector need to be identified by regulators, and so that they would also need to have an effective information security management system in place. Okay. So, what is the need of it? India is facing a barrage of cybersecurity related incidents as recently as we have seen in the case of AIMS attack in 2022. Threat actors backed by nation states and even organized cyber crime groups are attempting to target critical information infrastructure of our government and enterprises. So, that's why cyber attacks need to be tackled, because the entry threshold for new cyber criminals has considerably reduced. Okay, so the next topic is NBS fertilizers. This topic is important for your economy section. So central government has brought diammonium phosphate, muriate of potash, and all other such fertilizers which receive NBS support under reasonable pricing control. We all know that unlike urea, NBS fertilizers uh,
have this MRP, which is fixed by the government, but they are technically decontrolled. So these NBS scheme, the nutrient based subsidy scheme, is meant for fertilizers which are essential for crops. And this scheme was introduced in 2010, and the MRPs of these fertilizers are supposed to be market determined, but of course the government pays a fixed per ton subsidy. That's why the government in effect controls the price through interventions. So, NBS was intended to promote balanced fertilization by discouraging farmers from applying too much urea. Okay, NBS was meant to encourage product innovation and increase use of complex fertilizers. So, what are the decisions which have been taken by central government? So, Department of Fertilizer is saying that reasonableness of MRP has to be ensured for all non-urea fertilizers. So, from these guidelines would be applicable retrospectively from 1st April 2023, and the maximum profit margins have been defined for fertilizer companies: 8% for importers, 10% for manufacturers, and 12% for integrated manufacturers. So companies who are earning unreasonable profit, that is beyond this limit, will have to refund the same to the Department of Fertilizer by 10th of October. If they don't return it, they will have to pay it with an interest rate of 12% per annum on a pro rata basis, and unreasonable profits would also get adjusted in the future fertilizer subsidies. So how will companies assess this? That if they have earned unreasonable profit, they will have to self-assess it first, and if they fail to do the same, then Department of Fertilizer will scrutinize this reasonability of MRPs. Okay, so what is the significance of these new guidelines? Of course, non-urea fertilizers, or even though the prices of them are determined by market factors, they are under informal price control, and this would continue to work like this until at least the Lok Sabha elections are over. Okay. So the next topic is e-ink displays. This topic is important for your science and tech section. So with the crisp paper-like screens, e-ink displays like the Kindle are a pleasure to read on. So these ink displays are a special type of screen technology often used in e-readers like the Amazon Kindle. This technology was originally developed in 1990s at MIT and is now owned by E-Ink Corporation. These screens work using tiny microcapsules filled with positively charged white particles and negatively charged black ones suspended in fluid inside the display. So when positive or negative electrical charge passes through it to different areas of the screen, the white or black particles are made to rise to the surface, creating the text and images on the display. Unlike LCD and LED display, which use a black light, e-ink displays instead reflect light just like the paper, and which makes them easier on the eyes for long reading sessions. They also require very little power, okay, because they do not have a backlight. They are easier to read also under bright lighting conditions. They consume very little power. They cause less eye strain for the user, but because they have a very low refresh rate, they are unsuitable for video or animation. So this is the limitation on color or resolution also. And these displays are very expensive also. So of course they can be used in bus stop displays and walking direction signs, and even restaurant menu boards. So the next topic is ECOWAS. This topic is important for your international relations. So recently the military regimes of Burkina Faso, Mali and Niger have announced that they are immediately withdrawing from West African Bloc ECOWAS, which is also known as CEDEAO in French. So it is a regional group which was established in 1975 through Lagos Treaty, and it aims to promote economic integration among its members. So vision of ECOWAS is the creation of a borderless region um, with the which is well integrated with the principles of democracy, rule of law, and good governance. And the aim of it is also to have a single common currency to create a single large trading bloc in the area of industry, transport, telecommunication, energy, financial issues, social and cultural matters. It also operated a regional peacekeeping operation known as ECOMOG, which was led by Nigeria in 1990s and early 2000s, and its headquarters is located in Abuja, that is in Nigeria. So the next topic is exercise Sada Tanseek. This topic is important for your security section. So in a major boost of ties, militaries of India and Saudi Arabia are conducting their first joint military exercise named as Sada Tanseek, which is the inaugural edition of India-Saudi Arabia joint military exercise, and it is being conducted from between 29 January to 10th February 2024. And
This is the aim of this exercise is to train troops of both sides for joint operations in semi-desert terrain under the UN Charter. Okay. So the next topic is anti-profiteering provisions on GST. This topic is important for your economy section. So Delhi High Court has recently upheld the constitutional validity of anti-profiteering provisions in the GST. So what is anti-profiteering? Which means that whenever any reduction in GST rate is done, the benefit of it should be passed on to the end consumer. If a business does not pass it out to the any GST rate cut to the end consumer, it means that it is illegally increasing the price of that particular product and to earn more profit or illegally profiting from that rate cut. Okay, so government has created this national anti-profiteering authority to find and take action against taxable registered persons who are indulging in these illegal profiteering. So any interested party can refer this matter to a local screening committee, and this matter would go to state level screening committee, which will examine this matter. This screening committee determines that information, if this information contains merit, then it shall forward it to with recommendations to the standing committee on anti-profiteering, which after finding any proof, then refers the matter to Director General of Safeguards for a detailed investigation. If even the DGS also collects evidence, conducts an investigation, and issues notice to the interested party, then the matter goes to the member committee, who will then pass an order to mandate reduction in prices, return the extra money charged to the recipient along with interest, or even impose a penalty as specified under this act, and even in certain circumstances cancel the GST registration of that particular business. Okay. So the next topic is Maratha military landscapes. This topic is important for your art and culture section. So Maratha military landscapes of India will be India's nomination for recognition as UNESCO World Heritage List for 2024 and 2025 period. So Maratha military landscapes of India were developed between 17th and 19th centuries, and they represent an extraordinary fortification and military system envisioned by the Maratha rulers. So more than 390 forts in Maharashtra are there, out of which only 12 forts have been selected under the Maratha military landscapes of India. So Maratha military landscapes are an extraordinary network of forts varying in hierarchy, scale, and typological features. So Maratha King Chhatrapati Shivaji Maharaj from 1670 to Peshwa rule till 1880 uh, is responsible for the creation of these forts, and they are distinct forts in the Sahyadri mountain ranges, Konkan coast, Deccan Plateau, and Eastern Ghats in the Indian peninsula. And these are the 12 forts which have been forwarded for nomination. Okay, the names of which are mentioned here. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.